Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the next levels of biological organization, that is tissue and organ level. So let's move to the class board. So dear students, levels of biological organization. We have studied in the previous lecture the first level, that is atomic and subatomic level. Then we studied the second level, that is molecular level. Then we studied the cell and organelle level. So these three levels has been discussed in the previous lecture. So let's have a brief overview of these levels. So electrons, protons, and neutrons, they arrange themselves in a particular way and they form a structure that is called as a smallest particle, that is called as atom, which is the smallest particle of a pure substance, and it is indivisible or non-divisible. And two or more than two similar or different atoms which are joined or which are attached with each other by chemical bonds or linked with each other by chemical bonds like ionic, metallic, covalent or coordinate covalent bond. So it forms a molecule, clear? And upon the basis of their weight, molecular weight, there are two different categories of molecules, micromolecules and macromolecules. And biologically, they are divided into organic and inorganic. Clear? So dear students, the particular arrangement of micro and macromolecules, they form a structure which is called as organelle, and the organelles, they arrange themselves or assemble themselves in a particular way, in a specific way, to form a cell. And each cell has got its own function. And in the previous lecture, we have also studied that in the organelles in a cell, there is a division of labor. Okay. Now the fourth level is the tissue level. So dear students, in multicellular or multicellular animals and plants, similar type or kind of cells are arranged in the form of loose sheets or bundles the resulting structure is called a tissue. Clear? So multicellular animals or multicellular plants,
चूंकि हम पढ़ चुके हैं पहले भी इन द प्रीवियस ग्रेड्स, और आगे चलकर हम चैप्टर नंबर 5 में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम किंगडम्स को डिस्कस करेंगे. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ट्रू मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. और डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द फंजाई दे आर आल्सो मल्टीसेलुलर. तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक द एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक जैसे सेल्स, सिमिलर टाइप और सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड in the form of loose sheets. लूज शीट्स की शक्ल में या फिर बंडल्स की शक्ल में अरेंज होते हैं, और उससे रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा टिश्यू. क्लियर? द टिश्यूज perform a specific function. Clear? और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ग्रेड 9 में आपने एनिमल और प्लांट टिश्यूज की क्लासिफिकेशन भी डिटेल से पढ़ी थी. और यहां पर आपको एक बेसिक बात बताता चलूं, ये आपने हमेशा याद रखनी है. इफ वी टॉक अबाउट द animal tissues, there are 4 basic types. एनिमल टिश्यूज याद रखिए कितने, टोटल 4 बेसिक टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज की, जिससे मिलकर तमाम एनिमल्स बनते हैं. इन 4 से ज्यादा नहीं. क्लियर? इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं. यही 4 बेसिक टिश्यूज हैं जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, उनकी बॉडी, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ऑर्गन्स, उनके ऑर्गन सिस्टम्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं. और वो 4 बेसिक टिश्यूज कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? होपफुली यू नो. Number 1 is nervous tissue. Which is made up of neurons. Clear? And neuroglia. Number 2 is muscular tissue. और मस्कुलर टिश्यू डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के डिफरेंट मसल्स हैं, आप पढ़ चुके हैं. स्मूथ and the cardiac, which make the heart, and the skeletal, which are attached to the skeleton. And the skeletal muscles. Clear? और नर्वस टिश्यू ये 2 तरह के सेल से मिलकर बनता है. बेसिकली न्यूरॉन्स, और दूसरे इसमें सेल्स होते हैं न्यूरोग्लाया. क्लियर? और तीसरा जो बेसिक एनिमल टिश्यू है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. इसके नाम से जाहिर है ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है. और इसमें भी आपने मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज पढ़े. कनेक्टिव टिश्यू के जो इसमें जो सेल्स हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज and adipose. So these cells, they make the connective tissue. Clear? And the fourth type, the fourth basic type of animal tissue is the epithelial tissue. और डियर स्टूडेंट्स, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं. आई एम जस्ट रिवाइविंग योर नॉलेज. क्लियर? आप इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं ग्रेड 9 के अंदर. और एपिथेलियल टिश्यू, इट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 5 कैटेगरीज. जी डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 द स्क्वेमस epithelium,
then is the cuboidal epithelium, then there is columnar epithelium, then there is ciliated columnar epithelium, and finally the stratified squamous epithelium. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, यही 4 बेसिक एनिमल टिश्यूज हैं और इन्हीं से मिलकर तमाम एनिमल जो हैं उनकी बॉडी, उनके ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ. क्लियर? और हर एक का अपना अपना फंक्शन. नर्वस टिश्यू, इट इज इन्वॉल्व इन द transmission of nerve impulses. ठीक है? Muscular tissue, it is involved in the movement of the organs, movement of substances, and the movement of blood. Clear? Connective tissue, ये connect कर रहा है, like blood, like bones, like cartilage, like adipose. Clear? Epithelial tissue, इसकी different ये categories, मुख्तलिफ तरह के structures जो है हमारी body के वो बनाने में हिस्सा लेती हैं. And if you talk about the plants, प्लांट टिश्यू, उसमें भी हर टिश्यू का अपना अपना फंक्शन, और ये भी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम यहां पर जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हैं. सो प्लांट टिश्यूज, तो जनरल क्लासिफिकेशन इसकी देखेंगे. सो इट इज मेड अप ऑफ नंबर 1 द सिंपल टिश्यू, जिसमें एक ही तरह के सेल्स होते हैं. ठीक है? और दूसरा है इसका कंपाउंड टिश्यू, जिसमें एक से ज्यादा मुख्तलिफ यानी मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड. कंपाउंड टिश्यू. अब जो सिंपल टिश्यू है डियर स्टूडेंट, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2. Number 1, the meristematic tissue, और meristematic tissue further आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है into apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. Clear? And the second category is of the permanent tissue. It is also simple tissue, and it is further divided into epidermal and ground and support tissue. And the support tissue, it is further subdivided into sclerenchyma and collenchyma. Clear? और स्क्लेरेनकाइमा फिर आगे फर्दर डिवीजन, सब डिवीजन फर्दर. तो ये बेसिक नॉलेज. क्लियर? और कंपाउंड टिश्यू में 2 ही टिश्यूज पढ़े आपने. एक जाइलम, which is further composed of 2 different cells, the vessels, vessel elements, and the fibers, जिसको ट्रेकियड्स भी कहते हैं. क्लियर? और दूसरा फ्लोएम, which is composed of companion cells and sieve tube cells. क्लियर? और यहां पर भी प्लांट टिश्यूज में हर टिश्यू का अपना अपना फंक्शन.
सिंपल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, ये वाहिद ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है, ये डिवाइड हो सकता है। एपिकल मेरिस्टेम जो रूट्स की टिप्स और शूट्स की टिप्स पे मौजूद है। लेटरल जो लेटरल साइड्स पे, इंटरकैलरी जो इंटरनोड्स की बेस के ऊपर मौजूद है। परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर एबिलिटी नहीं है डिवाइड होने की, इसीलिए इसको परमानेंट कहते हैं। एपिडर्मल जो बाहर कवरिंग की शक्ल में होता है। ग्राउंड टिश्यू जिसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है और सपोर्ट जो कि सपोर्ट कर रहा होता है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा एडल्ट प्लांट्स को हार्ड जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे वुड वगैरह, वहां पर पाया जाता है। कोलनकाइमा सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, या फिर जो बेबी प्लांट होता है सॉफ्ट प्लांट जिसको हम कहते हैं, उसमें कोलनकाइमा। कंपाउंड टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम is involved in the transport of water and salts and minerals, as you know, and phloem, it is involved in the translocation of food, including sugars, including proteins, etc. Clear? तो एक हर एक टिश्यू का अपना अपना फंक्शन. So this is called as tissue level. Now we are moving towards another level, the fifth level, that is organ level. Organ level and the organ system level. So first of all मैं organ को discuss करूंगा और इसी के साथ फिर इसका part भी organ system level. So dear students, what is an organ? So two or more than two different tissues performing not similar but related, performing a related function is called, the structure is called an organ. Clear? दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ, डिफरेंट, नॉट सिमिलर, डिफरेंट टिश्यूज एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेगा, नॉट सिमिलर, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गन। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, द ऑर्गन लेवल is highly developed in animals, while it is less definite in प्लांट्स। क्लियर? यानी एनिमल्स के अंदर ऑर्गन लेवल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का अल्लाह ताला ने बनाया, जबकि प्लांट्स जो हैं उनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गन्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है और उनके अंदर वो लेस डेफिनेट है। क्लियर? अब अगर हम बात करें, लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द स्टमक एज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन, stomach, which is an animal organ. So its function is number one, partial digestion of proteins. Number two, secretion of gastric juice.
Number 3, mixing of food and moving food towards the posterior end of stomach. Clear? So these are the major functions of stomach, and also the temporary storage of food. वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए खाना यहां पर आकर स्टोर होता है, और यहां पर खाने के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होती है, मुकम्मल डाइजेशन नहीं। और यहां पर सेक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस, जो कि 3 चीजों पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 12 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में, HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। और फिर इनको मिक्स करना और फिर इसको पीछे की तरफ धकेलना टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टुवर्ड्स द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। ये इसके फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अल्लाह ताला ने यहां पर 2 मेजर टिश्यूज रखे। सो टिश्यूज in stomach to perform all these function includes, number 1, the smooth muscles, which is the muscular tissue, and number 2, secretory epithelium, which secretes the gastric juice. Clear? और डियर स्टूडेंट्स, ये 2 मेजर टिश्यूज यहां पर मौजूद हैं। और थर्ड वन इज द नर्वस टिश्यू, जो नर्व्स यहां पर आ रही हैं, स्टोमक को सप्लाई की जा रही हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो ये 3 टिश्यूज मेजरली द स्मूथ मसल यानी मस्कुलर और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये एपिथेलियल टिश्यू, ये मिलकर क्या बना, ये 2 डिफरेंट है ना। ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट है, ये नर्वस टिश्यू डिफरेंट है, मस्कुलर टिश्यू डिफरेंट। ये 3 डिफरेंट टिश्यूज मिलकर क्या कर रहे हैं, ये स्टमक को बना रहे हैं, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, और ये 3 मिलकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये मिलकर ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि फंक्शन किसका है, स्टमक का। If we talk about the partial digestion of the proteins, secretion of gastric juice, and temporary storage of food and mixing of food, the organ is only one, that is stomach. Clear? So this is how the organ level is formed and how it works. इसी तरह से if we talk about the plants, अब जिस प्लांट्स में भी हर टिश्यू का अपना अपना फंक्शन, जैसे कि हमने बात की थी कि जो वहां पर जो जाइलम और फ्लोएम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करें, लेकिन प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम है वो थोड़ा सा कम ऑर्गेनाइज्ड है, लेस डेफिनेट है। हाँ, उसमें हम रूट्स कह सकते हैं, ऑर्गन्स हैं, उसकी स्टेम ऑर्गन है, उसके लीव्स ऑर्गन है, उसके फ्लावर्स ऑर्गन है, और वहां पर भी वो देखें मुख्तलिफ तरह के इसमें टिश्यूज मिलकर उसको इसमें डिफरेंट प्लांट टिश्यूज मिलकर उसको इनके ऑर्गन्स बना रहे हैं और उनको क्लियर कट फंक्शंस में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? जैसा कि जो फ्लावर्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, उसमें उसके वर्ल्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसी तरह से अगर हम बात करें लाइक द लीव्स, दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। क्लियर? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें स्टेम, ये सपोर्ट है, ये और इसमें ट्रांसपोर्ट टिश्यू मौजूद है, ये सपोर्ट कर रहा है प्लांट को। इफ यू टॉक अबाउट द रूट्स, ये भी ऑर्गन है जो कि बेसिकली मिनरल्स और रूट जो वाटर है उसको रूट्स में से एब्सॉर्ब, सॉइल में से एब्सॉर्ब करके और पूरे प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। और रूट्स दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एंकरिंग द प्लांट टू द ग्राउंड। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, और इन ऑर्गन्स को ये फंक्शंस कैसे मिलते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टिश्यूज। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड द ऑर्गेनिज्म लेवल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।